Hello, good evening. Hello, नमस्कार दोस्तों. I hope you guys are doing good. Wednesday live में एक और सेशन में आपका स्वागत है. I welcome you all for the Wednesday live session. Every Wednesday we come and we discuss a lot of things which may be relevant for you. And here I am today again with some of my team members to discuss about few things which is of very very interest to you. एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ. जब मैं फाइनेंशियल मार्केट इकोसिस्टम में जर्नी मैंने चालू की थी कमोडिटीज एनालिसिस से, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन था. इनफैक्ट 2005-6 में जब मैंने सबसे पहले गोल्ड का एनालिसिस चालू किया था, फिर क्रूड ऑयल का, परफेक्शन होता था एकदम. जो एनालिसिस करता था लगता था कि एग्जैक्टली वही मार्केट कर रहा है, लगता है कि कोई मेरी बात सुन रहा है और मार्केट को वैसे रिएक्ट करवा रहा है. सो टिपिकली एक एनालिस्ट को हमेशा एक बिलीफ सिस्टम रहता है कि मेरा जो कॉल्स है, मैं जो ट्रेड आइडिया जनरेट कर रहा हूँ, वो मोरलेस एक्यूरेट ही रहता है, तो उसमें गलत कुछ नहीं है. लेकिन when I left that analysis job and when I became a trader in 2006, for 6 months it was pretty dark. पता नहीं था चल क्या रहा है. जो सोचते थे वो हो ही नहीं रहा है. गोल्ड सोचते थे बढ़ेगा, बढ़ता था, लेकिन पैसे नहीं बनते थे. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, जो इमोशनल एक इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है जब हम ट्रेडिंग करते हैं, वो शायद उस समय तक बिल्ड नहीं हुई थी. जो एक इंटेलिजेंस मैंने गेन किया एज एन एनालिस्ट, एज अ ट्रेडर वो इंटेलिजेंस गेन करने में थोड़ा टाइम लग गया. तो इट टुक मी 6 months टू ट्रांजिट माई सेल्फ फ्रॉम एन एनालिस्ट टू अ ट्रेडर. ओके. और ट्रेडिंग तो आप सबको पता है कि इट्स अ एवरग्रीन प्रोसेस. ये हर समय होता है. ट्रेडिंग कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैंने सीख लिया और कल से मैं ट्रेडिंग करना चालू कर दिया. और कभी ऐसा भी नहीं होता है कि जो काम मैं 2 साल पहले करता था वो आज भी उसी फॉर्म में हो रहा है. नहीं होता है. इट्स अ कांस्टेंट इवॉल्विंग प्रोसेस. और अपने आप को आपको इट्स लाइक यू कॉल इट यू आर राइडिंग अ टाइगर. एक टाइगर की आप सवारी कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा ताकि आप बचें, नहीं तो टाइगर आपको खा जाएगा. तो trading is a very very dynamic occupation, and unless you are grossly involved in that occupation, you are not able to succeed. तो जब एनालिसिस से ट्रेडिंग में उतरा, तब एक चीज समझ में आया कि जब लाइव मार्केट के अंदर में हम सीखते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो उसका एक अलग ग्रेविटी है. बिकॉज थियोरेटिकली बुक्स पढ़ के, वीडियोस देख के, कॉन्सेप्ट सीख के हमको लगता है कि हम सीख चुके हैं. Internally we start feeling satisfied ki yes, we know about trading as an occupation, but finally when we go actually and try to swim, we are unable to swim. So swimming or any kind of hyperactive sports can best be done after you participate in that sports. मतलब लर्निंग बाय डूइंग, मतलब आप उतरोगे तभी आप सीख पाओगे. तो ट्रेडिंग भी एकदम वैसा ही है. इट्स लाइक एन हाइपर एक्टिव स्पोर्ट्स एंड यू नीड टू बी actively participating in the market before you call yourself a trader or a successful trader. तो आज मेरे साथ में मेरे 3 टीम मेंबर्स हैं who have down and out proved themselves to be fantastic trader. They started their journey as an analyst, all of them, and now they are trading and they are successfully trading with their own capital. So let me just show you a glimpse of all 4 of them. Here they are. Hello, everyone. Hello, entire team. How are you doing? Hello, sir. We are doing fine, I think. Fantastic. Good to see you guys virtually. Although we are always connected offline, but it's good to see you guys virtually as well. Great, sir. Same. Okay. So the way it's going to be that we're going to take one speaker at a time. So I'm going to start with Shoradeep because I have the longest association with him, and then I'm going to take other 2 guys in conjunction independently. So let me remove you and you, and let me just talk to Shoradeep. Hello, Shoradeep. Hi, sir. Hello. So you need to be a bit louder, Shoradeep. Now, Yes, what sir. so Am I there are audible right a lot of, yeah, you're audible. So there are a lot of things जो हमको बात करनी है, हमको समझना है. पहले तो मैंने अपनी जर्नी बताई कि कैसे मैं एनालिस्ट से ट्रेडर बना, एंड you know how it was painful. So tell us about your journey. आपने you have done your MBA from MDI Gurgaon, which is one of the top business schools in India.
one of the top Yes. 10 business schools rather. And uske baad mein you got into trading or analysis. How has been your journey? No, the beginning was with the CRISIL and HSBC as an analyst. This, everyone goes through the journey, and it is very difficult to get to a trading job or become a trader suddenly after you do an MBA, because initially the capital is not with you, and also no one hires you directly as a trader at the very beginning. So I had to go through the initial journey as an analyst, but I always felt that the knack was in the trading, and then moved to Future First. There I was trading in the global market ICE exchange, that is Intercontinental Exchange, and for last 5 years with you and on my own, doing great. Fantastic. So, please share your experience of Futures First with us. What was that organization? What did you trade there? Because ultimately, your journey from a boy to a man, or from an analyst to a trader, happened in Future First. So, let's talk about your, and there are many people who are watching us in Hindi. So, अगर आप English use कर सके, let's talk in Hindi a bit and then English in the middle. So that will be better. Sure, sir. Future First was something that fortunately occurred to me, and that fortunately happened to me, because there we were in the same pit, having traders who were trading in Sona, Chandi, gold, क्रूड ऑयल, इंटरेस्ट रेट, सारा एसेट क्लास एक पिट के अंदर ट्रेड होता था, ठीक है. सो ऑल वर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, एंड सो देयर वाज इमेंस नॉलेज शेयरिंग. एक दूसरे से हम सीखते रहते थे. देखिए, इंटरेस्ट रेट ऐसे मूव कर रहा है, क्रूड ऑयल ऐसे मूव कर रहा है, तो दूसरा एसेट क्लास पे हमारा ये इफेक्ट आएगा. एंड दिस experience, or this correlation of the market, and that you get the feel from the discussion in the pit, that makes you very mature as a trader. Because आप देख ही सकते हैं कि अगर डॉलर इंडेक्स मूव करता है, उसका इम्पैक्ट इक्विटी में, जैसे लास्ट 3-4 दिनों से डॉलर इंडेक्स 108 से 109 से 106 पे आ गया, तो हम देख सकते हैं कि इक्विटीज में कितना बढ़िया रैली है. तो ये जो कोरिलेशन है, और सारा एसेट क्लास का एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, तो आप मल्टी एसेट ट्रेडर बन जाते हो. तो इन फ्यूचर फर्स्ट यू वर ट्रेडिंग ओनली वन, बिकॉज आई वाज ट्रेडिंग इन एनर्जी डेरिवेटिव्स ओनली. सो आई वाज ट्रेडिंग इन डीजल, आई वाज ट्रेडिंग इन ब्रेंट क्रूड ऑयल देयर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, सारे एसेट क्लासेस का एक बहुत बढ़िया आपका एक्सपीरियंस और नज़ारा, देखने का नज़ारा बन जाता है, जो आप कोई भी चीज ट्रेड करो उसको आपको बहुत हेल्प करता है. Yeah, सर, यू that आर is नॉट. true. I totally agree, because when I started with commodities, I think it was one of the best decisions of my life, because commodity एक core है किसी भी financial transaction का, इनफैक्ट किसी भी तरह का ट्रेड का, रियल ट्रेड का core है commodities, which comes from that concept of economics where competitive advantage theory, that one country has an advantage of commodity, other country has an advantage of other resources or manpower or whatever. So ultimately, the global trade started when commodities was exchanged with other services which other countries were giving. तो ये था. और फिर उसके बाद में दुनिया में आया करेंसी, which was like the common medium of transaction. और फिर Yes. उसके बाद businesses built हुए, and businesses के बाद आई equity market. So if you see, the mother of financial markets has been commodities, because that was the first instrument which people probably traded बार्टर in real. इंस्ट्रूमेंट. Barter बार्टर. instrument, correct. People used to do barter trade. तो जो history of financial market पढ़ चुके हैं, like there is a very good book which I read many years ago. It was called History of Speculation, which talks about that why world में why humans are very different from other animals, is because we learn the art of speculation quite early, and राइट. that is leading to evolution and growth and so many things. Very interesting books which I've been able to read. So yeah, so जब आप एनालिस्ट से ट्रेडर बनते हैं, तो आपका EQ का रिक्वायरमेंट बहुत अलग होता है, बिकॉज IQ तो आपने प्रूव कर दिया है एज एन एनालिस्ट, यू डू डेवलप दैट IQ. सो EQ कैसे डेवलप करते हैं? सर, ईक्यू सिस्टमेटिक रिस्क टेकिंग के थ्रू ही बन सकता है. एक मेंटरशिप जो होता है ना, जैसे मैं बात करूंगा मेरा फ्यूचर फर्स्ट का एक्सपीरियंस, क्योंकि वो इतना बढ़िया था, क्योंकि देयर इज अ सेट ऑफ सीनियर्स हु ऑलवेज मेंटर यू टू हाउ टू टेक द रिस्क, हाउ टू
मैनेज रिस्क, हाउ टू मैनेज लॉसेस, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ गेन नहीं होता, लूजिंग डेज भी आता है। तो लूजिंग डेज में कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके लॉस लिमिट रखना है, और जिस जो गेनिंग डेज है उसको बड़ा करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज सर आता है कि जब आप कोई एस्टेब्लिश ट्रेडर से आप इंटरेक्ट करते हो वीकली, मे बी 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, एंड मे बी डेली 10 मिनट्स एट द एंड ऑफ द डे। तो इससे आपका इमोशनल क्वेश्चन से जो लोग ऑलरेडी प्रूवन प्लेयर है, जैसे आप देखोगे कि क्रिकेट में क्या होता है, आई लव क्रिकेट सो टेक द एग्जांपल। तो क्या होता है कि जो बड़ा प्लेयर होता है ना सर, उसके पास सारे जो बडिंग प्लेयर है जाके उससे टिप्स लेते हैं। तो ये क्या होता है ना, देखने का जो नजरिया है वो एटीट्यूड डेवलप कर जाता है। जब आप उनके साथ बात करते हो, उनके उनके तरीके देखते हो कैसे वो फॉरवर्ड करते हैं, हाउ दे डू थिंग्स। That is true. In fact, ultimately, growth of a trading desk is also dependent on the new talent, which is again dependent on the old talent. Because ultimately, the old talent will train the new talent and so on. तो ये जो mentorship की जो प्रथा है इंडिया में, कि हमारा गुरु जो है वही हमको एक्चुअली सही पाथ दिखाता है, that is always there. But Shoradi, talking about the live trading session. So हम लोग, as you know, 29th July ko we are having this live trading Yes, session from morning 9 o'clock to night 8 o'clock, and yes. you are a master in crude oil. I've never seen anyone so accurate in crude oil predictions. तो आप crude oil में live setup, live trading, live कुछ कराने वाले उस दिन? Yes, we will discuss the setup, and apart from plain technical analysis को apply करके how to see, and we will discuss a lot about the data, that because crude oil is a mother of all commodities। पूरा ग्लोबल इन्फ्लेशन, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स, बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। तो क्या क्या चीज़ें हमें देखते रहना चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेस होता है जो इन्फ्लुएंस करता है। देखिए क्रूड ऑयल में एक तो है आपका एक बायस बनता है, ट्रेंड का बायस। ट्रेंड का बायस आपका जियो पॉलिटिक्स और न्यूज़ फ्लोस और जो प्रेजेंट सप्लाई डिमांड डिनामिक्स है उससे बनेगा। अब आपको ट्रेंड पता चल गया, ट्रेंड क्लियर हो गया, तो अब आप करेंगे इन द फेवर ऑफ द ट्रेंड, आप जो ट्रेड लेंगे वो इंट्राडे आपके एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो सकता है। अदरवाइज जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है उसके बेसिस पे आप ट्रेड लेंगे। सो वी विल डिस्कस द होल थिंग। वी हैव ऑलमोस्ट 3-4 hours session in the evening, so we will discuss about the crude oil, and Sunando will be with me. He will discuss about other commodities and currencies also. Yes, yes. I'm looking forward to that session because it's my first love and I always want to visit. You always want to visit your first love, right? Every time you see her, you want to talk to her, isn't it? Yeah. Anyways, so thank you. I'll get back to you, Shuradeep. Sure. And let me just onboard now that you have talked about Sunando. So let me onboard Sunando first and then I'll onboard Kaushik. So, Sunando, you are one of the Good the evening. most one of the most experienced traders in the domain of currency and commodity. So we want to know about your history of tracking these markets, trading these markets, and how has been your experience as a real trader. Uh, it is first of all not true that as a trader I have a decade experience, but as a analyst come trader I have a more than a decade experience in foreign exchange. I'm from MBA school, that Institute of Financial Management and Research. They train our banking governors and banking presidents. It's a training school for them, so it's a very close associated with Reserve Bank of India. So Yeah. while I was there, before I even finished my MBA, I started gaining interest in currencies somehow. It just attracted me. I just started learning about them, knowing about them, and fortunately, there I met my first mentor, Dr. Bobby Srinivasan, a Singaporean citizen, and he was also an option trader in Chicago Mercantile Exchange in Euro USD and gold. So I started to assist him. He was not very familiar with charts, but he has his own methods, which I might have still have to revisit again after even after this 10 years.
So there my learning started, and he was quite a great teacher. Even I know of a time when he was called directly to Reserve Bank of India about his suggestions regarding inflation and our currency crisis during 2013. So learning curve was good, and after I all that learned up, I decided I'm ready to take on the financial market, but no one was ready to take me because I'm also a bit of a stubborn because I decided I'm into currencies. So no matter how, I'll have to find global markets, and whichever firm is doing global trading, no matter whatever how much they're paying me, and the payment, believe me, it was very very low. So anyway, I started. I found it that was a difficult part. Always have been to find a firm that is trading actively and directly interacting with forex brokers. So finally, all this journey ended me to finally a foreign firm that is from Korea, and they're main one of the pioneers in cryptocurrencies. Actually, the boom of crypto started in South Korea region. So that's where my trading journey actually began, and trust me, it was very very embarrassing. Lot of people lose money in the market, but I am not like others, because I already have been analyst. All my trading calls were growing great, and people were making money, and just not making money in rupees, they were making money in dollars. So I thought I'm the superman. So after deciding that, I just entered the market to find that market is actually the Superman. I'm nothing. And there comes the big difference. I was fully frustrated. I was about to get kicked out from the trading floor because I was losing money. And even my calls were going right. My colleagues were making money. I was making loss. So then Okay. came my second mentor, who helped me understand the difference between an analyst and a trader. An analyst is a static person. He forecasted that crude is going to go there. Maybe he is right, but he will never go through the journey path that a trader has to go in. Once I betted money, every time crude goes down or goes up against my trade, I get a thakka in my book, but the analyst does not get the dhakka in the book. That was a big. So a trader is same as analyst as long as a trader is a dynamic analyst, because market is constantly moving. So we have to flow with the market. But being a dynamic analyst is not at all easy. So I learned from my mentor that it is better to understand where the market is, in which phase. It is a bearish range, it is bullish, is it bearish, is it bullish range, where the market is. And once we know that, based on our emotions and our risk, maybe I'm not that strong in emotion to hold 10 lots of crude, but one lot of crude as a retail trader may will make me money. Once I understand in my heart that, then the trading part comes relatively easy. Yeah, So it does. yeah, It thank does. you. You have pretty much summed up what I wanted to listen from you. That yes, it's a journey which is worth living, but Definitely. आपको सोच समझ के ये जर्नी में उतरना पड़ेगा. And I think live market practice or maybe a simulation environment where you can practice. Although I'm not a big fan of simulation, मुझे लगता है कोई simulation में practice करता है तो नहीं नहीं. वो मतलब वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोरी से ही तैयार कर रहा है, बिकॉज सिमुलेशन हैज नो EQ. So you always feel that you are right in simulation, right? One student recently made a $9 billion in simulation. I don't think he'll be replicating that in real market. I don't think so. It will replicate I mean, point 0.9 or $0.09 million in real market, because real market means real blood pressure, real hair loss, real Yeah. weight put on, and so on. Anyways, let's not digress. So, thank you. Let me come back to you and discuss this in length. Let me go to our professor. So let me just talk to Kaushik. So Kaushik, Yep, you come from a very, very unorthodox background, from being a right, professor to a trader. This is like a transition, which I'm sure your family would have asked question कि ये क्या कर रहा है ये अपने life के साथ. Wait, right. So, when I wanted to trade markets, I mean, the family was not very okay.
कि क्या कर रहे हैं अभी, इतने स्ट्रक्चर्ड और अच्छे प्रोफेशन से कहाँ ट्रेडिंग में जा रहे हैं. सो दैट वाज द क्वेश्चन दे हैड. But then I showed them my ledger that what I am doing, and they were pretty convinced after that. So I guess after anything, money speaks. तो वो या एक convincing होता है. एकदम सही। Right. ये पैसा बोलता है, वो गाना था ना, छन हाँ. छन की सुबह फनकार फाइनली Right. पैसा बोलता है। Right. So इन दिस जो हम लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें मैं थोड़ा ओपन इंटरेस्ट पे डिस्कस करने वाला हूँ कि ओके, ओपन इंटरेस्ट कैसे एनालाइज करते हैं लाइव मार्केट में, और उसके साथ थोड़ा सा मैं उन्हें कि हाउ यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस व्हेन यू आर इन अ ट्रेड. क्योंकि मैं थोड़ा नॉइजलेस ट्रेडिंग करता हूँ. आई डोंट लुक एट एनी अदर थिंग एक्सेप्ट चार्ट एंड डेटा. तो मेरा उसी पे ही फोकस होता है कि सिर्फ डेटा और चार्ट जो बोल रहे हैं वही करो, उसके अलावा कुछ भी बरोबर, मत करो. तो बस उसी का एक डेमोन्स्ट्रेशन होगा ये लाइव सेशन में. सो दैट्स द आइडिया. सही है, सही है। और यू नो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर कितना फीस है, कितना फीस है, तो मैं बता देता हूँ कि इस इवेंट का कोई हमने ओपन नहीं किया है सबके लिए। ये हमने स्टॉकेज क्लब के जो हमारे मेंबर हैं उनके लिए हमने खाली ओपन कर रखा है, वो भी फ्री है उनके लिए। तो अगर आप इस इवेंट का पार्ट बनना चाहते हैं तो स्टॉकेज क्लब का आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और मुझे कौशिक, जस्ट गिव मी 2 minutes, लेट मी जस्ट टॉक अबाउट या क्लब विच इज लाइक द वन ऑफ द बेबीज विच आई हैव। तो मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि मेरे 3 बायोलॉजिकल बच्चे हैं और 3 वर्चुअल बच्चे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बेबीज विच वी हैव कॉल्ड स्टॉकेज क्लब। So I'm sure you must have heard from me many times, but let me just reiterate. So Stockage Club एक कम्युनिटी है जहाँ पर 9,000 से ज़्यादा पेड मेंबर्स हैं। ये एक प्रीमियम कम्युनिटी है। यहाँ पर फ्री राइडर्स के लिए कोई जगह नहीं है। हमको वो लोग नहीं चाहिए जो फ्री चीज़ों पे लैच करते हैं, जिनको लगता है फ्री में सब कुछ हो सकता है, या जो कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, जो खाली लेना चाहते हैं। सो इस क्लब के अंदर में हमने हमारे तीनों प्रोडक्ट का सिंक्रोनाइज कर दिया है लर्निंग और अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इलन मार्केट्स के लर्निंग कंटेंट, स्टॉकेज के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम आउटपुट्स, और स्टॉकेज सोशल जो कि एक स्टॉक सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ सीरियस डिस्कशंस है, जहाँ पे अलग अलग क्लब्स हैं। फंडामेंटल क्लब देखिए 7,500 मेंबर फंडामेंटल में, टेक्निकल में 7,600, स्टॉक आइडिया सेक्शन जिसमें हम स्टॉक आइडिया जनरेट करके लोगों को देते हैं, उसके अंदर में तकरीबन 9,300। एक्सपर्ट क्लब जहाँ पर ग्रीन टिक होल्डर है, तो Mr. Brahmachari is there, Miss Jyoti is there, Karan is there, so many people who are SEBI registered people, उनको हमने ऑनबोर्ड कर रखा है जो आपके साथ में फिल्टर्ड और रेलेवेंट बातें कर रहे हैं। उसके बाद है कमोडिटी करेंसी क्लब जिसमें सनंदो एंड अदर पीपल आर कॉन्स्टेंटली गिविंग यू आइडियाज विथ रिस्पेक्ट टू करेंसी, क्या ट्रेड करना चाहिए, कैसे, एंड ऑल द करेंसीज विच आर लेजिटिमेट जो आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसे यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जो कि एक्सचेंजेस में अवेलेबल हैं। उसके अलावा कोटक का रिसर्च टीम है यहाँ पे, वो इज कॉन्स्टेंटली गिविंग न्यू स्टॉक आइडियाज टू आवर मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम देयर कस्टमर्स। तो उनको भी हमने यहाँ पर ऑनबोर्ड किया है। एंड ऑल दीज मेंबर्स प्लस एक्सपर्ट्स, तो अगर आप पीपल में देखेंगे तो यहाँ पर कई एक्टिव मेंबर्स हैं। हम इनफैक्ट मेंबर ऑफ द मंथ भी लोगों को बनाते हैं और उनको पूरा पैसा वापस करते हैं जो मेंबर ऑफ द मंथ बनता है। सो पीपल हु आर एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स, दे गेट द मनी बैक। And there are green tick holders which are experts, and there are blue tick holders which are technically people like all of us internally who are helping you to become a better market participant. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कम्युनिटी हमने बिल्ड कर रखी है। इनफैक्ट लेट मी शो यू ऑल द पोस्ट विच ऑल दीज 3 gentlemen have been putting. So ये शोरोदीप है, he has 8,900 followers in club, and he constantly कीप ऑन एडिंग न्यू आइडिया। जहां जहां उनको लगता है कि उनकी आइडिया से एक मार्केट का डायरेक्शन उनको व्यू दिया जा सकता है, ही कीप्स ऑन कमिंग आउट एंड गिव हिज व्यू। देन यू हैव सनंदो हु इज ऑलवेज एस डबल सनंदो ए. का, हाँ, सनंदो का स्पेलिंग में मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो वी हैव सनंदो हु हैज 5,000 फॉलोअर्स और वो कॉन्स्टेंटली करेंसी पे अपना व्यू देते जा रहे हैं। देन वी हैव कौशिक
जो नॉइजलेस ट्रेडर है हमारे, एंड इनका मैक्रो व्यू बहुत सॉलिड होता है मार्केट का, कि वो अलग अलग एनालिसिस करके अपना मैक्रो व्यू देते रहते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम देम योर्स ट्रूली इज ऑल्सो देयर. तो मुझे भी कुछ कुछ समझ में आता है, तो मैं अपने आइडियाज देता रहता हूँ, लोगों के आइडियाज पे कमेंट करता रहता हूँ. सो देयर इज सो मच वी ऑल आर डूइंग इनसाइड स्टॉकेज सोशल. सो अगर आप स्टॉकेज क्लब के मेंबर हैं तो आपको स्टॉकेज सोशल का एक्सेस मिल जाएगा. तो व्हाट आई सजेस्ट इज, अगर आपको मार्केट में सीरियस काम करना है तो 1 साल के लिए कम से कम स्टॉकेज क्लब का मेंबरशिप ले लीजिए. You will really learn. At the same time, there are enough trade opportunities available that you will be able to trade. And I'm sure you will find value in all these things. ये जो अभी हम इवेंट कर रहे हैं, this event is basically worth 5,000 rupees, but for club members we have kept it absolutely free, ताकि क्लब मेंबर जिन 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 जिनसे हम कमिट करते हैं कि आपको में हम अच्छा सीख और प्रॉपर लर्निंग देना चाहते हैं, these people should get benefit, as much benefit as possible from us. तो ये तो हुई क्लब के बारे में बातचीत. अब थोड़ा सा टॉपिक डाइग्रेस करते हैं और let's go back to all four of us. Okay, so let me just add all four of them. Okay, so चलिए कुछ मस्ती करते हैं. तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको उसका जवाब देना है. अगर आप एग्री करते हैं तो ये, और अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो ये चलेगा. ठीक है, सही है. तो अगर मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहता हूं तो मुझे 1 साल में रिजल्ट दिख जाएगा. व्हाट इज योर आंसर? No, I was not audible. But Yeah. nothing is impossible, but very, very unlikely. So I'll ठीक convince. ठीक है, अगर मैं सक्सेसफुल ट्रेडर, कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना चाहता हूं तो मैं साल का 60% रिटर्न जनरेट कर सकता हूं कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. It depends on the strategy that you're deploying. तो वो तो है ही सारा, मैं ये सारा हाँ डिपेंड्स है. हाँ I'll have to vote for this, that this can be generated, depends on asset, particularly my asset. I want to people to get interested in. That's the problem. Indian people don't do foreign exchange trading, but little margin. USD just 2,000 rupees you need, and USD overnight moves 400 rupees, so you make anyway 20% return, and that's a move is even higher for GBP INR. So I will give a possibility, but it's required some learning. They're a bit different from our equity market. All right, fair point. I will like to put forward that initially it may not be the case in the first 3-4 years, but after 4-5 years, annually something between 40% to 80%, like some Yeah. year 40%, some year 80%. So on an average, 60% pre-tax is quite doable. Yes. मैं 5,000 रुपए से ट्रेडिंग चालू कर सकता हूं. No. Zero. सर ट्रेडिंग तो आप स्टार्ट कर सकते हो, बट आपका हाँ. एक्सपेक्टेशन फिर आपको सही सेट करना पड़ेगा. एक रिलायंस तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं. राइट. But definitely, some people have known. We should acknowledge today's world that Bitcoin has gone from cents to 1 lakh or more dollar. So that we need to acknowledge that more and more digital assets and different kinds of assets are coming. So the possibilities could be limitless for the coming generation. Okay. So, what is the minimum capital? Now, this is an answer which can be one single number. Okay. कितना मिनिमम कैपिटल होना चाहिए कि मैं फुल टाइम ट्रेडर बन सकता हूं? मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के खाली ट्रेडिंग करूंगा. मेरे हिसाब से 15 लाख मिनिमम कैपिटल होना चाहिए अगर
क्योंकि 15 लाख का प्री टैक्स, क्योंकि बेसिक 5 लाख तो के बिना कैसे चलेगा। तो अगर 30% इनिशियली भी मैं मान लूँ कि मैं बहुत सीख के आया हूँ, 30% 35% मैं प्री टैक्स बना सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे 15 लाख तो मिनिमम फुल टाइम के लिए चाहिए। बट इफ यू आर नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर, इफ यू आर डूइंग अ जॉब समथिंग, आप कोई काम कर रहे हैं, साइड बाय साइड ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से दैट कम्स डाउन टू 3 लाख। बट इफ यू आर फुल टाइम इनटू इट, 15 शुड बी द मिनिमम, आई इन माय Kaushik, what's your figure? Right. So my figure is 20 lakhs. I did that math also just 1 month back. I अच्छा did that बताइए। math कि uh, क्योंकि जब आप फुल टाइम ट्रेडिंग में आते हो आपके ऊपर कुछ लाइबिलिटीज है विच आर ईएमआईज एंड अदर थिंग दैट यू हैव कमिटेड। तो वो डिप्लॉय करने के लिए आपको ज्यादा सेफर स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी पड़ती है विच आर स्प्रेड्स एंड अदर थिंग, राइट। तो उसके लिए एक सर्टेन कैपिटल हो सकता है, सर्टेन कैपिटल इज फॉर अल्फा जनरेशन। तो मैं वो मैथ कर रहा था, मुझे समझ में आ रहा था कि 10 लाख के आसपास आपका स्प्रेड में जाना चाहिए। मेजरली स्ट्रैडल स्ट्रैंगल जो आप बैंक निफ्टी निफ्टी में कर सकते हो विच आर सेफर स्ट्रैटेजीज, 5-6 लाख उधर होना चाहिए। एंड 15 lakhs would be somewhere, 10 lakhs would be somewhere for futures trading, where only 30% of the capital you deploy from that 10 lakh, और उसमें पिरामिडिंग अपॉर्चुनिटी आपको 2 बार मिले, तो 30-30-30 के बास्केट में आप करो, तो इसमें आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर 20 लाख हो, इन अ स्ट्रक्चर्ड वे आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा मैथ है उसमें। सनंदो। If you are doing currency trading and want to be a full-time trader, I think 3 to 5 lakhs is a good amount to start with because of the high generation of capital, sorry, return. And if you are doing into commodities, then 20 to 25 lakhs is the minimum you should look for, not on the max side. And it is a bit on tough. The contracts are very large, so we need that kind of money. But currencies, one can start small with 3 to 5 lakhs, and for part-time position, those who want to keep position overnight and using a larger time frame for analysis, they can start with 1 to 1.2 lakhs. I know of a real figure because one of our student trader who is from the TMP course, and he started with 1.2. So he's trying to earn 10,000 per month. He has set a target of that, and for past 3 months, I think he is surpassing his target broadly. That's good, good. So TMP is one of our common program, trading mentorship multi-asset program, where all four of us there, along with Chetan Bhai, and we are teaching people this whole science of multi-asset trading. So I'm very proud of all you guys. The way you are empowering all our learners is amazing. So technical analysis now again 1 and 0. Okay, technical analysis सीखना बहुत जरूरी है if you want to become a trader. Price action सीखना more important है rather than just moving averages or any other sophisticated stochastic, and price action is a must for me. Okay. What is the maximum drawdown? मतलब अगर आपके पास सपोज 10 लाख रुपए हैं और कितना लाख रुपए लगने के बाद आप बोलोगे कि ये हमसे ना हो पाएगा? I'll say never. ये हमसे होना नेवर। ही पड़ेगा, ये होना अगर ही 9 लाख पड़ेगा। अभी 9 नहीं लाख हो रहा है रुपया तो लग होना गया, पड़ेगा। खुद 9 को लाख रुपया लग थप्पड़ गया तो मारना भी पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, बट मुझे फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर बनना ही पड़ेगा। आई हैव नो अदर चॉइस। आई So ऑल्सो एग्री विद हिम, क्योंकि क्या होता है कि इनिशियली इंसान 5 लाख रुपए लेके आता है। काफी केसेस में देखा जाता है कि विदाउट, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज नहीं होता इनिशियली, और रिस्क टेकिंग कल्चर नहीं होता है। रिस्क टेकिंग इज अ कल्चर, बिकॉज यू कैन नॉट टेक वेरी इरेशनल रिस्क, राइट। सो रिस्क टेकिंग कल्चर जब तक बिल्ड होता है तो वो 5 लाख में से 4 लाख या कुछ जा चुका होता है। So that person, what he does is that he comes back with a fresh capital, but this time with learnings, and possibly in most cases he will become a good trader if he's having a good environment around him. So I think one should not quit trading ever. तो अगर आपके 10 लाख रुपए लग गए तो अभी क्या करना है? वो 10 लाख रिकवर करने के लिए आना है कि नया पैसा कहीं से लेके आना है कि व्हाट शुड यू डू? सपोज यू आर डाउन बाय 10 लाख,
So And you if don't I have had, capital. I don't have capital, I will do some other work, save money, maybe come back after 2 years into the market, and this time play with more discipline and more risk management. That is what I would do. सही है. I think if we are disciplined, what Shorodip sir teaches, I think we will not lose 10 lakhs money. We might lose 30, 40, even 50%. But after that, we'll have to say something is wrong, boss, with us. We need to go back to our drawing board and come back with 5 lakhs capital we have. I'll not wait for losing 10 lakhs of capital. Yes, Okay. what Shananda put that in the TMP, I teach a template where it is almost impossible for somebody to lose beyond Yeah. 50% of money. Shanando has seen the video also. I have done a webinar on risk and money management on that. That is available in the Elon markets also. It is, and that is why if you have the learning, it is almost impossible to lose practically more than 40% of capital. So that's the way. If you learn, you won't lose that much capital. Okay. एंड ब्रॉडली इट इज इन साइकिल्स कि आप एज अ ट्रेडर आप बनते हो, थोड़ा जाता है, फिर कुछ आएगा, फिर कुछ, Hmm. जब फर्स्ट टाइम पैसा जाता है तब और लर्निंग्स आती है, तो वो ट्रेडिंग पूरा साइकिल्स में चलता रहता है. सो टिल द टाइम यू डोंट लूज मनी, आपको वापस से मार्केट में आना पड़ेगा टू बिकम अ बेटर ट्रेडर. सो दैट्स द लर्निंग. So, I'm going to give an analogy of Virat Kohli. He was the star number one cricketer, and today we are talking about dropping him from one day side. So every person will see bad times. It's just that you need to believe your skills and just be there. नहीं तो ये बहुत इजी है विराट कोहली के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के बॉलीवुड ज्वाइन कर लेगा बट देन ही विल नॉट डू इट बिकॉज ही इज अ क्रिकेटर बाय हार्ट बाय माइंड बाय सोल बाय everything, every part of his body belongs to cricket. So he will come back for sure, maybe a temporary. So trader has to always think like a cricketer, like a volleyball player, like a footballer, like a swimmer. So in a Die-hard small lover. level, when Die-hard I'm lover. yeah, so when I'm swimming, so these days every morning I'm swimming, and when I'm swimming, every time I do a freestyle movement, I always say this to myself that I'm the best, I'm the best, I'm the best. So yes, there will be times when I'll be bad, but that's it. I mean, you need to believe yourself. So I totally agree to what you guys said. And guys, ये जो लाइव सेशन होने वाला है, इट इज नॉट जस्ट गोइंग टू बी ट्रेडिंग 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 और स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी. ये लाइव सेशन के अंदर में हम लोग ये बहुत सारी बातें करेंगे विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट. हम लोग बात नहीं करते एंड दैट इज वेयर अ ट्रेडर हु टिपिकली लिव्स अ लोनली लाइफ. ये भी मैं बार बार बोलता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर और एक ट्रेडर में सिमिलैरिटी है कि दोनों लोनली लाइफ जीते हैं. तो यू नीड टू टॉक, यू नीड टू कम्युनिकेट, यू नीड टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ एंड आउटसाइड वर्ल्ड. सो ये ट्रेडिंग का जो लाइफ मैराथन होने वाला है, इसमें हम लोग पूरा दिन बात करने वाले हैं. कभी ट्रेडिंग की बात करेंगे, कभी स्ट्रेटजी बात करेंगे, कभी लाइफ के बारे में बात करेंगे, बस बात करेंगे. सो दैट दिस मॉर्निंग 9 to 8 becomes extremely productive for all of you. So there is no cost, but yes, if you are a Stockage Club member, even if you take 1 month club membership, which is quite reasonable, but obviously I don't want you to do that. I want you to be with us for 1 year and enjoy the patronage of Stockage members as well as the analyst team which we have there, and enjoy for 12 months the whole learning and the earning experience. Saleh, thank you so much. Anything would you guys would like to add before we close this one for today? Yeah, I लर्निंग तो just सर बहुत होने वाला है क्योंकि ट्रेड देने में तो बस कितना टाइम लगेगा, मॉर्निंग में 10, 20, 25 मिनट्स, बीच में कभी ट्रेड आ गया तो बाकी लर्निंग तो बहुत आने वाला है. एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड एनकरेज द रिटेल प्लेयर्स टू ट्राई एन एफएक्स मार्केट. दैट्स विल बी Yes. माय एम. And not just encouragement, we need a lot of entertainment from you also, Sanando. and also, The- sir, I wanted to point out one thing, because this is not just a standalone session. We may hold this kind of session on a regular basis. If we see people liking us, people getting a learning, if we get the feedback, we will continue this possibly quite frequently. So to So this join, is going to be for club members. We intend to make it a very regular affair. So we are going to experiment this time. How are we getting the response? How are people joining us? If there are more and more people coming and they are giving good feedback, then we will try to make it an extremely regular affair.
Chaliye, thank you And so much. yeah, Kaushik, before we closing words from you. या सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग ओपन इंटरेस्ट क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इट्स द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी. तो ओआई Ah, कैसे बिल्टअप होता है इन फ्यूचर्स इन ऑप्शंस, ये एक अलग ही साइंस और मजा आता है ये डिस्कशन में, और वो हम देखेंगे लाइव मार्केट में. सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट. सही सो है. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस सेशन. बाय द वे, आज मैं एक वीडियो रिलीज कर रहा हूँ मेरे चैनल पे 7:30 बजे. दैट इज अबाउट हाउ टू फाइंड आउट विच सेक्टर ऑपरेटर इज बेटिंग बाय लुकिंग एट ओपन इंटरेस्ट. बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है. तो आई एम श्योर पीपल विल लव इट एंड यू गाइस आल्सो सी दिस एंड गिव मी अ फीडबैक whether you are finding this science logical. Chale, Definitely. thank you. Thank you, everyone. Thank you for your time. And Well all talking my to you. ELM learners and learners of my channel, I'm really looking forward to you guys joining this. So, club में आइए boss. Club is something which is lovely. It is changing lives. एक साल के लिए try करके देखिए. You will not regret. I'm sure you'll find enough value in the work which we have been doing. Come to club. You'll enjoy. Bye bye. Take care.